Hello and good morning to all my dear students. I am your English teacher Piyush, and today we are going to continue with the new poem, that is The Lazy Frog. And the title itself indicates that this is about a frog who is very lazy. So before we begin the poem, I actually want to ask you one simple question. You all must have heard the story of uh, Hare and the Tortoise. Of course, you must have. In which the tortoise, who was even though slow, but he was not lazy, and finally he won the race. So that story becomes a story of the past, and today we are going to start a new story. And there is one more question that is asked in this poem. On a school day, you are busy studying, playing, and chatting with friends. But when you have a holiday from school, what do you do? So that's a very interesting question. During school days, we all keep ourselves occupied throughout the day in the school, and then at home also we do our homework, we play with friends, we enjoy our life, right? But whenever our holidays start, we start, you know, a different routine from our daily school life routine. We start a different way of living. Like we wake up late in the morning, then we get less to do some work, so we sit idle and our mind also becomes lazy. So remember one thing, if uh, our mind becomes lazy, we won't be able to progress in our life. So keep your mind active, and apart from keeping your mind active, you need to put your plans into actions. Whatever you are planning to do not skip it for the next day. And from here, let me tell you the word for the day also. Just note down the word for the day, that is procrastination. I'll spell it out for you. It is Procrastination. Procrastination. I'll repeat the spelling. Procrastination. Procrastination. Procrastination means to skip doing any work so that it can be done in future. Or in simple word, avoid doing work so as to do it in future. So basically what happens when our mind becomes lazy, even though we get ideas, even though we have plans in mind, yet we do not put our plans in action. This is where we Indians are lacking with. यही जगह है जहाँ पर हम इंडियंस बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, एंड दिस इज़ वेयर वी हैव टू वर्क आउट प्रोकास्टिनेशन. वी हैव टू ओवरकम आवर प्रोकास्टिनेशन. हमें अपनी ये जो माइंड की जो मेंटेलिटी है ना कि हाँ यार कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एंड देयर इज़ अ वेरी फेमस प्रोवर्ब ऑल्सो इन हिंदी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, right? So with this, we shall begin this poem now. So would you behave like a little like the frog in the following poem? And let's read out what about the frog in the following poem. All right. So the frog's name is Fred. So Fred is a very large, very lazy frog who lolls all day upon a log. Okay. So Fred is a very lazy frog, and another word for lazy is fatigue. Fatigue. I want you to note down all these words, and I want you to add these words apart from your vocabulary part. I want you to add these words in your vocabulary section, okay? In your word meanings. ये words भी आपके add होने चाहिए. So who lolls? Lolls means sits or lie down. Okay?
जो बैठता है, या लाई, LIE, लाई डाउन। ऑल डे अपॉन अ log, log मीन्स अ पीस ऑफ वुड विच हैज़ बीन कट ऑफ, एक पेड़ का हिस्सा जिसको काट दिया जाता है, दैट इज log, ताकि फर्नीचर बना सके उसका, या और सम फॉर अदर पर्पसेस लाइक, ओके। सो ही ऑलवेज मैनेजेस टू shirk, 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 shirk means avoid doing any work, okay. There is one more word in Hindi, kamchor. So in English we call work shy, work SHY, shy, work shy means kamchor, or the meaning of work shy is one who shirks, SHIRKS, shirks from doing any work, मतलब जो काम करने से जी चुराता है। So he always manages to shirk doing a single stroke of work. So he was also the one who would avoid doing any single work, even the movement of his hand. अपना हाथ भी हिलाने से उसको प्रॉब्लम होती थी, इतना ज़्यादा वो कामचोर था एंड इतना ज़्यादा वो लेजी था बेसिकली। So basically what happened, his poor old mother calls in vain. So his mother was already aware that he was very lazy. So she tried to give a last try. तो उसने last try किया. Poor here does not mean गरीब. Poor here means बेचारी, helpless, you can say. So his helpless old mother calls in vain. Vain means uselessly. Okay, uselessly. So what did she say? Come in and help. अंदर आओ और मेरी मदद करो. But did he listen to his mother? No. He does not bother. Bother means pay attention. Keep on noting down these words. I want you to add these words in your vocabulary part. Okay? In your word meanings. He does not bother. He does not give attention to move 2 inches. 2 इंच भी मूव करने की उसने नहीं सोची. And instead of doing that, he preferred, much preferring means उसने ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी, ज़्यादा एक कहते हैं ना कि उसका साथ देना. सो उसने क्या सोचा, टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. सो ही प्रिटेंडेड एज इफ ही कुड नॉट हियर हिज मदर्स वॉइस. उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसको अपनी मदर की आवाज़ सुनाई ही ना दी हो. सो ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप. हीप मीन्स ढेर. सो ही कीप्स ऑन लाइंग देयर. देयर मीन्स ऑन द log, उसी log पे. इन अ साइलेंट हीप मतलब जैसे चुपचाप एक ढेर पड़ा होता है एक किनारे पर, बुक्स का ढेर हो गया या किसी और चीज़ का. सो इन द सेम वे ही ऑल्सो केप्ट लाइंग ओवर देयर. ओके, एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep, and he continues his sleeping which he used to do. So if a lady frog hops past, we all know that in every country, in most of the countries in the world, ladies are given much respect. Okay, so having this mentality, the poet here wants to bring attention. कहता है कि इस मेंटेलिटी के साथ, जब आपको ये पता होगा कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, तो ये सोचते हुए तुम क्या सोचोगे, इफ़ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट, होप्स मीन्स जंप्स, राइट डाउन दिस वर्ड ऑल्सो, होप्स जंप्स. पास्ट, पास्ट मतलब किसी जगह से निकलना. यू वुड थिंक, एंड हेयर पास्ट मीन्स उसके पास से निकलना. सो यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट. तो आप सोचोगे चलो अब तो उठ जाएगा कि लेडी को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेडी का की कोई मदद करनी हो, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट ही वुड बी हेल्पिंग हर. फॉर व्हाट पर्पस? टू बो. बो मतलब झुक के नमस्कार करना, एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और रास्ते में उनकी हेल्प करना कहीं जाने में. बट नो, लेकिन इस मोमेंट पे भी उसे कोई शर्म नहीं आती, वो नहीं उठता. आई एम अशेम्ड टू से, मुझे ये बात बोलते हुए शर्म आ रही है, पोएट ही बोल रहा है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, कि जब एक लेडी फ्रॉग भी वहाँ से निकलती है, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, तो तब भी वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता.
So basically it all depends on ourselves, how we want to be, हमें कैसा बनना है. It's not that we should keep on doing work throughout the day. There's one incident, or I would say a mentality of one very famous personality, Steve Jobs. Steve Jobs was the founder of Apple company. Okay. And Apple company के बारे में सबको पता ही, all are familiar with Apple mobiles, Apple laptops and everything. So Steve Jobs used to hire lazy but smart employees for his company. वो अपनी कंपनी के लिए स्मार्ट, लेजी तो होते थे लेकिन वो स्मार्ट एम्प्लॉयज़ होते थे. मीन्स उनका माइंड जो था वो एक्टिव रहता था. सो द पर्पस बिहाइंड हिज हायरिंग ऑफ सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ वो को क्यों रखता था अपनी कंपनी में? बिकॉज दे ऑलवेज लुक्ड फॉर शॉर्टकट्स. क्योंकि ऐसे लेजी लोग जो होते हैं वो हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं. बट दे वर नॉट लेजी, दे वर स्मार्ट बीइंग्स. तो वो हार्ड वर्क की तरफ कम प्रेफरेंस करते हैं, वो स्मार्ट वर्क की तरफ प्रेफरेंस करते हैं. एंड कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो, आजकल का टाइम जो अगर हम देखें, हार्ड वर्क इज लेस इम्पोर्टेंट एंड स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट. Earlier hard work was very important, but now since machines have taken all the hard work from human beings, so it is very important that we think smart, that we act smart. So my point is, don't get lazy, but do not do much of hard work, rather focus on much of smart work. अगर आपको हार्ड वर्क करना ही है तो ऐसा हार्ड वर्क करो दैट योर वर्क गेट्स नोटिस्ड एंड देयर इज नो अदर वे फॉर इट. और उस हार्ड वर्क का और कोई तरीका ना हो. अदरवाइज ट्राई हैविंग मोर ऑप्शंस ऑफ डूइंग वन थिंग इन माइंड. एक काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके सोचा करो माइंड में, एंड ट्राई डूइंग इट इन बोथ द वेज. Okay, so with this good thought for the day, I think or thought of the day, I think we should sum it up, and in the next video we'll continue with the word meaning, sorry, the exercise part and the question answers part. Okay, so as far as today's homework is concerned, I want you to complete your word meanings today, including the words which have been told to you, and also mention the word of the day also for every day. Okay, so take care, have a good day and enjoy your life.